In these modules, we shall construct factor groups from homomorphisms. Let G be a group and let S be a set having the same cardinality as G. Then there is a one-to-one correspondence between S and G. We can use this one-to-one correspondence to define a binary operation on S, making S into a group isomorphic to G. Naively, we simply use the correspondence to rename each element of G by the name of its corresponding under this one-to-one correspondence element in S. We can describe explicitly the computation of xy for xy belonging to S as follows. If x corresponds to G1 and y corresponds to G2, then z corresponds to G1, G2, then z xy equal to z. तो ये वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस हमने जब आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे भी देखी थी. यहाँ पर जितने एलिमेंट्स G के अंदर हैं उतने ही एलिमेंट्स हमने S के अंदर लिए हैं और वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस G की S के साथ इंट्रोड्यूस की है. और वी शेल डिनोट इट बाय इक्वेशन नंबर 1. X corresponds to G1, Y corresponds to G2, Z corresponds to G1, G2, then X, Y equal to Z. The direction of the one-to-one correspondence, the direct direction of the one-to-one correspondence S equivalent to G between S belonging to S and G belonging to G gives us a one-to-one function mu mapping S onto G, and the converse direction of one-to-one correspondence gives us the inverse function mu inverse. Expressed in terms of mu, the computations 1 of xy for xy belonging to S becomes. अब हम जो हमने S की फॉर्म में वन टू वन क्रॉसपॉन्डेंस G के साथ ली थी उसको हम म्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं और म्यू जो है वो हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम S ऑन टू G. इफ म्यू x इक्वल टू G1 एंड म्यू y इक्वल टू G2, म्यू z इक्वल टू G1 G2, then xy equal to z, and we call this equation as 2. The map mu from S to G now becomes an isomorphism. आप बड़ी इजीली आइसोमॉर्फिक बाइनरी स्ट्रक्चर्स की जो हमने डेफिनेशन वहाँ पे हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया था उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि म्यू जो है वो आइसोमॉर्फिज्म है मैपिंग द ग्रुप S ऑन टू द ग्रुप G. नोटिस दैट फ्रॉम 2 वी ऑब्टेन म्यू एक्स वाई इक्वल टू म्यू जेड. यहाँ पे अब हम होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को चेक करना चाह रहे हैं और होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमें एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे S के अंदर से. तो 2 एलिमेंट्स हमने S के अंदर से लिए हैं आर्बिट्रेरी x y और उनका हमने प्रोडक्ट ले लिया. और आपको जैसा कि मालूम है S के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि हम जो हमारे पास जनरल सेंस में हम मल्टीप्लिकेशन को बाय कन्वेंशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं. तो म्यू एक्स वाई इक्वल टू म्यू जी एंड एज यू नो दैट म्यू जी इक्वल टू G1 G2 and Z is mapped under mu on G1 G2.
And but G1 is equal to, from equation 2 you can see that G1 equal to mu x and G2 equal to mu y. So it is equal to mu x into mu y. So the required homomorphism property is satisfied.